Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone for the daily news analysis session. और इस YouTube session में we'll discuss about all the important news from all major newspaper, but majorly we discuss about the Hindu Indian Express. And why I mention the major newspaper, because sometimes the article is very important, like in Business Standard, Economics Times, this is also we discuss. And कई बार आपके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में, लाइक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, like Ministry of Information Technology and all. And as we know that a newspaper is very important irrespective of the students who are preparing for which exam you are preparing for. So, and I hope my voice is completely audible and visible to each and everyone. So चलो शुरुआत करते हैं. So as we know that newspaper में आपको क्या क्या चीज़ें you must need to keep an eye on that. And one more thing that is important कि आपको न्यूज़पेपर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं. We discuss about all the national event, international events, economy based article, sports based, science and tech, person and news, summits and conference and miscellaneous. And we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is very important for your exam perspective. So my friends, my dear student, and it is very important to know about what is happening around us, because कई बार आपको देखना है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको एक ही सेम न्यूज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, राइट. सो दिस इज नॉट नीड टू कीप एन आई ऑन दैट. एक बार आप नोट्स बनाओ, दैट्स इट. हियर इज द कोट ऑफ द डे दैट नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग बट एनी वन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग, विच मीन्स दैट कि आपको पास्ट की चीज़ों को भूलो, आज से एक नई शुरुआत करो एंड मेक अ न्यू जर्नी. एंड हैज़ आई टोल्ड यू, न्यूज़पेपर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे. नॉट ईच एंड एवरी फैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट. ओहो, द हिंदू में है तो इंपॉर्टेंट ही होगा, इंडियन एक्सप्रेस में तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई. आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द एनी स्टूडेंट्स विल रीडिंग न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द knowing current affairs. And as we know that the questions of the day, will ask you the 5 questions at the end of this session. And please make sure, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And आज की हमारी न्यू इनिशिएटिव है आज से क्विक टिप्स. एंड व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन द क्विक टिप्स. क्विक टिप्स में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लाइक any mnemonics, any mind maps and all, so that in every session that we discuss about the quick tips. चलो, like mnemonics, कैसे कैसे इसको use करना है, how to incorporate, like because this is very important. This will help students retrieve information using the memory techniques by grouping small bits of information into a larger groups. तो ये चीज़ें आपके लिए important है. तो आज के सेशन से आज की नई शुरुआत है कि जितने भी आपके यूट्यूब सेशन होंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस में, वी डिस्कस अबाउट वन इम्पॉर्टेंट नेमोनिक्स और मेक श्योर दैट वी डिस्कस ऑल्सो अबाउट द माइंड मैप्स. हियर इज़ द वेरी फर्स्ट आर्टिकल वी टॉक अबाउट दैट कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट. अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 29 को रिजर्व किया एक वर्डिक्ट में, जिस वर्डिक्ट में मैंने उसने बताया कि लाइक चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. उसमें आपको मेनली बात करी दैट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के बारे में. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस वन इज, व्हाट डू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, and what say about the fake news, and who has filed petition against the amendment rules, what has a court observed about editorial content online. This is all thing that we discuss in the very simple and lucid manner. So as we know कि यहाँ पे 29th को यहाँ पे इस कहानी की जो शुरुआत होती है माय फ्रेंड्स 29th को होती है, और 29th को यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया पिटिशन के लिए. एंड फैक्ट चेक यूनिट जिसको नाम दिया उन्होंने FCU. और उसके बाद क्या हुआ, इस साल अप्रैल में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT दैट इज़ प्रोमulgated द 2023 IT रूल्स विच अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसमें कि IT रूल्स 2021 को अमेंड की बात की गई थी, राइट.
and it allowed the ministry to appoint a fact checking unit which is called FCU. Make sure ये जो FCU है my friends, this means that fact checking unit, fact checking unit. और ये जो fact checking unit है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करी. सब्सिक्वेंटली कुणाल कामरा एक सटायर बनाते थे, वो मतलब काइंड ऑफ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता था और कई बार सरकास्टिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो अपोज भी करते थे. तो कुणाल कामरा ने एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट है एंड उसके बाद उनके ऊपर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन्स दैट फाइल रिट पिटिशन. माय फ्रेंड्स, रिट होता है आपका इन द वायलेशन ऑफ समबडी फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ रिट एप्लीकेशन. सो उसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट करने की बात हुई यहाँ पे IT रूल्स एंड दैट परमिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ FCU. सो व्हाट डज द अमेंडमेंट से, इस अमेंडमेंट पे क्या बात की गई थी, क्या इसके क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दैट दिस अमेंडमेंट ब्रिंग्स. द अमेंडमेंट ब्रिंग्स अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू रूल्स 330B by the IT rules 2021, which deals with the responsibility of intermediary. They are now under the obligation to make reasonable efforts to ensure that users do not host, display, upload, modify, publish, transmit or store, update or share any information which is identified as fake or false and misleading by a fact check unit of the central government in respect to any business or central government. Obviously this is very important, क्योंकि आप देखो अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है और अगर वो कोई फेक न्यूज़ है, जैसे आपका एक ऑल्ट न्यूज़ है जो इनको चेक करता है कि वेदर द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट, तो गवर्नमेंट एक एजेंसी इस्टेब्लिश करना चाहती है. बिकॉज ये मिसलीड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो रिमोट एरिया में जब जाती हैं, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट, उन्हें लगता है दे एज्यूम टू बी दिस वन इज़ करेक्ट वन, दिस वन इज़ शोइंग द करेक्ट फैक्ट. तो उसके बाद क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में इस टाइप से रॉयट्स भी हुए, मुजफ्फरनगर रॉयट्स अगर आपको याद हो. सो कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर बता रखी है कि इस साल में कि कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें करी वो मैंने आपको बता दी. एंड द कोर्ट एक्सप्रेस द opinion that the prima facie the rules do not seems to offer protection for the fair criticism of the government like parody on a strike, and that highlights the ambiguity surrounding the term any business or central government. And the court also questions the sudden need to be FCO fact checking unit, pointing out that the Press Information Bureau PIB has been efficiently fact checking for the year, and also referring to undefined term in the rules such as fake, false and misleading. What are the parameters through this? कोर्ट का ये कंसर्न है कि उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि अनाउंस करने के लिए कि इन व्हाट पैरामीटर्स शुड बी यूज्ड टू फाइंड इट आउट वेदर द न्यूज़ इज़ फेक और नॉट. एंड सिमिलरली यू शुड नो अबाउट द कोर्ट ने ये भी चीज़ कही that it was a troubled by the fact that even the users whose post has been removed or whose account has been suspended by the intermediary after being flagged by the fact checking unit. So these things that you should keep in mind, what is FCU is, what kind of important takeaways that you should know about what is FCU stands for, fact checking unit, and what is digital media ethics code, what kind of amendments have been done, right? So now we got all the answers with the help of this beautiful article. Now we move to the next one. इसमें आपको इस IT रूल्स में मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स दे रखी है, सो दैट कि यहाँ पे सेक्शन 79 जो है of the act that grants immunity to the intermediary as long as they follow due diligence and state prescribed guidelines. बेसिकली इन शॉर्ट आपको मैं फ्रेंड्स बताऊँ, हमारे गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपकी क्या रूल्स हैं ट्विटर की, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वी डोंट केयर. हमारे इंडिया में अगर आपको यहाँ पे ये परमिशन, अगर आप ये जितने भी सोशल मीडिया है, तो हमारे यहाँ की जो रूल्स होंगे दैट यू आर बाउंड टू फॉलो दिस, राइट. सो 2021 का जो हमारा आर्टिकल IT रूल्स था दैट रिप्लेस द प्रीवियस गाइडलाइंस एंड दैट सॉट टू रेगुलेट इंटरमीडिएटरी एंड डिजिटल न्यूज़ मीडिया. और आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में मेंशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, and which can only be limited through reasonable restrictions that made by law or grounds stipulated in Article 19 Clause 2.
तो माय फ्रेंड्स, अगर आप सपोज ट्विटर या सोशल मीडिया पे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो which is not illegitimate, in that case government can apply the reasonable instructions on you. So the fake news and misinformation are not ground on which speech can be limited, and the amendments made to the IT rules do not caveat the restraints they place in any manner. और जो हमारा FCU है, FCU has limitless powers to decide what information is false and compel social media intermediary to act based on these things which are open-ended and undefined. Let's move to the next one. ये है आपका going nuclear. Basically इसमें क्या mention की गई है? As we know that India's economy is growing rapidly, expected to surpass Germany and Japan and move up from number 5 to number 3 position before the end of this decade. So economic growth triggers demand for energy. One would thus expect significant growth in our primary energy consumptions, which is already the third highest globally, and most of this based on fossil energy. So जो हमारा emerging economies country है which are expected maximum net growth in energy consumptions, that should the rapid development of new nuclear energy capacity in our area. These things that you should keep in mind. इसमें क्योंकि हमारी इकॉनमी जब ग्रो हो रही है, साथ साथ उसके इकॉनमिक ग्रोथ के साथ साथ डिमांड ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर वी कैन से फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ याद रखनी है. क्या क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे? पहली चीज़ में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए टू सपोर्ट अ डेवलप्ड इंडिया. India aspires to reach Human Development Index (HDI). My friends, ये जो HDI होती है Human Development Index, ये रिलीज़ करती है आपकी UNDP, United Nations Development Program, right? So India needs minimum of 2,400 kg oil equivalent energy consumption per capita per year, and this threshold could improve to around 1,400 kg as a result of expected improvements in energy use efficiency. This is more than 4 times India's present energy consumptions. And what are the major concern in the meeting energy requirement? One is fossil energy, that major contributor to global warming. Second one is hurdles to achieving net zero target. Third one is unable to meet per capita energy demand in the long term. And will the development of renewable energy meet India's anticipated energy demand? So while India is rightfully making rapid strides in development of the renewable energy, including hydro, would it be alone enable us to become the advanced country? The answer is, a big answer is no. Hypothetically, अगर हम देखें, even if the entire barren uncultivated land in India is used for setting up solar plants, and which clearly not possible, it would still fall way short of the target. And the potential of wind energy is even smaller. The only way out this is rapid scale up of nuclear energy. So my friends, this is important to understand this, what kind of things that global the developed nation have, and हम क्या क्या चीज़ें उसमें हम क्या फेस कर रहे हैं. फिर again in assaults, Hamas may have targeted Israel Saudi deal. So the tensions between Israel and Hamas जो है इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है. सो दोनों कंट्री के बीच में ये आर्टिकल्स बार बार आते रहेंगे, बट आप हम इसको शॉर्ट पॉइंट में कुछ न्यू चीज़ें उसमें ऐड ऑन होगी, देन दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड दिस. सो द दो कंट्री में Israel and Hamas that have been repeatedly flared up in hostilities, but one reasons in the Palestinians militants attack now could be disrupt ongoing negotiation mediated by the United States for the normalization ties between Israel and Saudi Arabia. और यहाँ के जो प्रिंस है दैट इज़ मोहम्मद बिन सलमान in 2022, उसकी उन्होंने बता रही की चीज़ें. So the two countries are on the cusp of signing an agreement that could potentially mark a tectonic shift in the political landscape in the Middle East. And Middle East के पास क्या है? ऑयल है, और ऑयल की ज़रूरत पूरे वर्ल्ड को है. So what is the potential deal? So the specifics are yet to be decided, but the broad contours of the agreement are known.
Saudi Arabia will recognize Israel for the first time since the latter establishment in 1948, and that more than resolving the Palestinian questions, Riyadh now wants security guarantees for the US, specifically protection against arch rival Iran. What does the Israel stand to gain? यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर दैट इज कॉल्ड इसराइल के है, दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू, दैट डील विल शिफ्ट द फोकस टू अ national pride and unity at a time when his government far fight policies. And जो Americans हैं that also want to improve fraught relation with the Saudis, with whom they have had several confrontation of late, that including over the murder of US journalist that Jamal Khashoggi by Saudi agents. And what about Palestinians? So it's difficult to say when they might get. Saudi Arabia has said it remains fully committed to the 2002 Arab Peace Initiative, in which Arab nations offered Israel normalized ties in the return for a statehood deal with the Palestinians and that a full Israeli withdrawal from the territory captured in 1967. So यहाँ से कहानी शुरू होती है. And now for my friends, आगे की कहानी देखते हैं कि why Gandhi was against the Jewish state in Palestine. Palestine belongs to Arab in the some sense, in the England belongs to English. तो ऐसे इस आर्टिकल मेंशन की हुई है. So Gandhi's article, the Jews, has been a subject of intense debate over the years, and it had been cited evidence of his naivete by some, with other have been is further proof. एक गांधी जी की एक मैगजीन थी, वो मैगजीन का नाम था माय फ्रेंड्स हरिजन. सॉरी. सो गांधी जी ने एक मैगजीन लिखी थी हरिजन. सो हरिजन एक वीकली मैगजीन थी, वीकली मैगजीन, and that founded by Gandhi, in which he expressed his view regularly on a range of subjects. And why his sympathy for the Jews? तो उन्होंने एक बुक में ये मेंशन की थी कि my sympathies are all with the Jews. They have been untouchables of Christianity. The parallel between their treatment of Christians and the treatment of untouchables by Hindus is very close, and the religious sanctions has been involved in both cases for the justification of the inhuman treatment meted out of them that Gandhi wrote in the Jews. So if there could be a justifiable war in the name of and for humanity, a war against Germany to prevent the wanton persecution of a whole race, that would be completely justified. And what is concern for the Arabs? So Mahatma Gandhi did not support a Zionist state in Palestine, which were already being planned. Second, Gandhi felt that the idea of Jewish homeland that was fundamentally antithetical towards the fight for the greater rights elsewhere in the world. उनका कहना था कि अगर Jews हैं have no home, but the Palestinians will have relished the idea of being forced to leave the other parts of the world in which they are settled. Sorry. And इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस टाइम में, सो हमने जो था यहाँ पे, as we know that जो Gandhi opinions had a profound impact on Jawaharlal Nehru, and that along with the Nehru's own anti-imperialism were responsible for shaping independent India foreign policy for decades. And India ने वोट किया था against United Nations resolution which partitioned mandatory Palestine between Jews and Arabs, and which was adopted by the UN General Assembly in the November 1947, while India did not recognize the state of Israel in 1950, and that officially diplomatic relations were not established until 1992 when P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister. So this entire things that has been done way before. Women want change, society needs change. ये आर्टिकल जो लिखी है हमारी विभा दत्ता मखीजा जी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के.
because अभी आपकी पार्लियामेंट में पास हुई विमेन रिजर्वेशन एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनेबलिंग जेंडर पैरिटी. द 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एंड ये जो पब्लिश कौन करता है माय फ्रेंड, दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. 17th एडिशन पास हुई यहाँ पे ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट GGR, that is published by World Economic Forum on June 20, 2023, that is based on data from 146 countries, and that has concluded that the current rate of progress, it will take 131 years to close the global gender gap, and it is 149 years in the populous South Asian country including India. So reservation is the most effective form of affirmative action, and equity the first step of equality, and that it leads to inefficiency or incompetency, simply making excuses for not rendering tightly guard space to outstate classes. And जो हमारा basic premises are that advocates against the reservation is that it will bring down competence, and this is completely misplaced notion in the of statistics. ये बहुत डिले के बाद हमारे कंट्री के अंदर विमेन रिजर्वेशन बिल आया, विच शोज दैट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड सॉरी so after much delay the constitution 128th amendment bill 128th amendment bill को amend करने की बात हुई. that popularly also known as Women Reservation Bill 2023 became a rare piece of legislation in independent India to be cleared overwhelmingly by both houses. It is indeed a groundbreaking event. While India's founding fathers ensured that India was early to adopt universal adult suffrage, and the आपका universal adult suffrage था, is my friends, irrespective of the gender, irrespective of the person, one who is above the age of 18 years that can cast a vote in a democratic nation. So across the world, women are appreciated by society in supportive and emotional roles, but very seldom in leadership roles. पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप देखें तो वुमेन की जो पोजीशन है दैट इज़ टू गुड इफ यू कंपेयर टू द लाइक अराउंड 18th or 17th century. But here we talk about in across the world, women are appreciated in a society in a supportive and emotional way, but not in the leadership roles. That's why government wants leadership role के लिए आपको parliament में women की participation is very important. And this is a historical evidence pointed out that, but for a few tables, and historical evidence ये करता है कि most women who make it to leadership position have a mixed up privilege of higher education, the support and influential mentor of families that belongs to upper caste or castes. If there is a survey and it is sure that the figure will show that the percentage of women legislature who had been university of higher education almost percent versus such a percentage of male legislator. मतलब women जो भी leadership position पे हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है दैट टू गुड, बट वो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं और कहीं ना कहीं ऐसे फैमिली से जो कि एक पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करती हो. ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट इज हेल्ड इन 1930 इन लंडन, a letter was written on the November 16, 1931 by Sarojini Naidu and the Begum Janhara Shahnawaz, presenting a joint manifesto by All India Women Conference, the Women India Association, and Central Committee for the National Council of Women in India. And what they demanded neither discriminatory nor favorable treatment for the basis of gender reservation, representation that thereby rejecting reservation. Incidentally, Sarojini Naidu had the advantage of being educated at the King's College London at Cambridge with a scholarship from the Nizam of Hyderabad. So why do women have to wait so long to close the gender gap? The present bill is the first step towards actualizing gender parity. Only one wishes that the implement would be based on the readjustment of seats on the base of 1991 census, as done on the scheduled caste seats by the Delimitation Commission,
rather than waiting for the delimitation exercised. The power of green methanol. इसमें यहाँ पे क्या बात की गई है, हमारी डिपेंडेंसी मोस्टली क्या है, किन कंट्री पे है, जो ओपेक कंट्री के ऊपर है. एंड नीति आयोग दैट बिलीव्स green methanol that can be used for power rail, roads and shipping. It reckons the new fuel can partially replace the LPG for cooking. So India is looking industries in which green methanol can be used. Niti Aayog believes it can be used by the power railroad, and beside that it reckons it can be partially replace LPG for cooking. That blending of 15% methanol in the gasoline that can result at least 15% of reduction. So these all things is important because highly जो बहुत ज़्यादा polluting container होते हैं ships, that fuel contribute 3% of global carbon dioxide emissions. Green methanol that can reduce CO2 emission by 95%. So this is very very important. And here the last इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया डिक्री काइंड ऑफ स्टेटमेंट होती हैं और ऑर्डर्स एज इट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर इट. एंड यहाँ पे एक जॉइंट ट्रायल पास की गई दैट बाबरी मस्जिद इशू के ऊपर, दैट सुप्रीम कोर्ट यूज फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142. चलो अब ये देखते हैं, या ये आपका क्विक टिप्स जो मैंने आपसे आज दी थी, उसमें आपको ऐसे माइंड मैप्स की विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ माइंड मैप्स दैट विल हेल्प यू आउट टू नोइंग अबाउट द फैक्ट्स कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें इज़ इंपॉर्टेंट. और इसमें देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से आर्टिकल 58 क्या कहता है, द एलिजिबिलिटी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, has completed 35 years of age and that qualified to be elected as a member of House of the People, not eligible to hold the office of profit. आर्टिकल 52 हमारा क्या था, देयर शैल ऑलवेज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 53 हमारा क्या पावर देता है प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूटिव पावर दैट वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सुप्रीम कमांड ऑन डिफेंस फोर्सेस. 54 जो बताई जाती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. एंड आर्टिकल 56 हमें डिमांड करता है टर्म ऑफ ऑफिस 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री. That is Article 57, yes, it is eligible for re-election. And Article 62, election to be completed before the expiration of the term of president. ये हमारा था आज का क्विक टिप्स. अगर आपको ये अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट एडवांटेज. और मेक श्योर अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. चलो अब फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे. हियर इज़ अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग अबाउट which of the statements about electrons is true? Electrons have positive charge, electrons have no charge, electrons have a negative charge and electrons have a positive charge. देखो at the time if you have gathered all the information but you required such kind of knowledge, but at the end you will solve the multiple choice question. So you have to develop such kind of temperament which is very important to solve the multiple choice question. My friends, atom made of 3 fundamental particles which is electron, proton and neutron. Electron contains negatively charged particle, proton is positively charged and neutron is chargeless particle. और कहाँ पे है negative charge? Yes, this statement seems to be true. Yes, this one is correct one. C was the right answer. चलो second one. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में. He had organized a revolutionary center in India House at London and propagated the cause of India's independence through his writings in his publication journal called the Indian Sociologist. Who he was? Ulaskar Datta, Rajendra Lahiri, Bhagwati Charan Vohra and Shyamji Krishna Verma. So C is the right answer. No, Shyamji Krishna Verma, D is the right answer. Yes, my friend. On the occasion of Shyamji Krishna Verma Jayanti, the Prime Minister paid tribute to great revolutionary and freedom fighter
जो हमारे S.K. वर्मा जी थे, वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी फाइटर, पैट्रियट, लॉयर एंड जर्नलिस्ट. He was born in Manvi, Gujarat on October 4, 1857. He was the first Indian MA and scholar in Sanskrit and English. He founded the Indian Home Rule Society, India House, and Indian sociologist in London. And he moved his base from England to Paris after criticism by the British. After the outbreak of First World War. Third one, messenger RNA के बारे में आपको पता नहीं है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. And yes, C is the right answer. mRNA is a type of mRNA, RNA, ribonucleic acid, and that carries genetic information from DNA to ribosomes for protein synthesis. Zealandia, fourth one पूछा, an extinct species of dinosaur discovered in Antarctica, a submerged continental mass that located in the southwest Pacific Ocean, the Lar Desert in Africa, the newly discovered planet in our solar system. तो आपका आंसर कौन सा है? B is the right answer. Zealandia is an underwater continent that located to the southeast of Australia, and it was recognized as the Earth's 8th continent in 2017. Here is the last question, and नाविक के बारे में, that known as navigation with Indian constellation, that consider the following statement. और इसमें से आपका statement C is the correct one. A Navik, also known as the navigation with Indian constellation, is a constellation of 7 satellites that owned and operated by India, and is offering precise navigation and positioning up to 1500 km beyond its territorial boundary. And it functions quite similar to the GPS, but it is owned and operated by India. See, it's अपना country का अपना indigenous Navik system है, indigenous GPS system है. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. अगर आपके पास if you have any questions, please let me know in a comment section. And ये session आपको कैसे लगी please हमें ज़रूर बताएं. And we'll meet you in the next session of daily news analysis. Till then, अपना ख्याल रखें. Bye bye and take care.